हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। टुडे 19th ऑफ दी सितंबर वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इन डेप्थ एनालिसिस। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इन डेप्थ एनालिसिस एक वीडियो आएगा G20 पे। सेम हम एक वीडियो आज पूरा लेक्चर करेंगे आदित्य L1 पे। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर 2022 के मेंस में जेम्स वेब टेलीस्कोप पे सिमिलर क्वेश्चन आया था और मोस्ट प्रोबेबिलिटी इज देयर कि इस साल तो क्वेश्चन नहीं आया आदित्य L1 पे या किसी भी स्पेस मिशन पे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले साल मोस्ट प्रोबेबली यू कैन गेट वन मोर क्वेश्चन ऑन स्पेस। देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट द स्पेशल सेशन, और स्पेशल सेशन में वुमेन रिजर्वेशन बिल एंड द हिस्ट्री ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल, कि वुमेन रिजर्वेशन पार्लियामेंट में कैसा था, क्या हुआ, कब हुआ, किसने दी ओरिजिन ऑफ द सीड्स एंड ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन रिजर्वेशन। तो फ्रॉम द हिस्ट्री टिल नाउ वी विल डिस्कस ऑल ऑफ इट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद आर यूपीएससी बैचेस। आर फाउंडेशन बैच एट दिल्ली आईएएस, दिस दिल्ली करोल बाग सेंटर हैज स्टार्टेड। कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी और आज अगर आपको रजिस्टर कराना है तो आप आज रजिस्टर करा लीजिए। इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करा लीजिए। उसके बाद कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यू विल मिस आउट ऑन क्लासेस एंड यू वोंट बी एबल टू कवर इट अप लाइक फास्टर। इससे बेहतर ये है कि आप इसको आज ही से स्टार्ट करो, आज रजिस्टर करो, या कल आप आ जाओ, कल रजिस्टर करके सीधा क्लास करो। कल आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा। तो आई वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन अस at Karol Bagh Center in our foundation batches, so that we build your foundation with the foundations of UPSC, as UPSC has always demanded what a strong foundation। कैसे? देखो, यूपीएससी का एक क्वेश्चन आया था 2023 के प्रीलिम्स में, और इस क्वेश्चन में अगर कुछ पूछा गया है तो दैट इज द फंडामेंटल्स, और यू कॉल इट फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि जब भी आप देखोगे किसी भी न्यूज़ चैनल को, किसी भी वेबसाइट को, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, तो दे विल कवर दीज स्पीशीज, है ना। जब भी ये न्यूज़ में आती है, जैसे ये लाइन टेल मकाक वॉज देयर इन न्यूज़ ऑन 4th of May 2022। तो करना क्या है, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है, कोई ऐसी स्पीशीज मिलती है न्यूज़ में, तो फर्स्ट सर्च व्हेन वाज इट इन न्यूज़। 2022 में न्यूज़ में थी तो इट्स स्टिल रेलिवेंट फॉर अस। डन। Once it's relevant for us, you know that it's relevance. Now what you need to do is आपको इस स्पीशीज की कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक्स। ठीक है, कि ये दिखता कैसा है ना। दिखने के बाद ये करता क्या क्या है, रहता कहाँ है, इसका क्लाइमेटिक रीजन कौन सा है, इंडिया में इसको किस जगह पे पाया जाता है, किस जगह इन द सेंस किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। इज इट इन दी वेस्टर्न घाट्स और इज इट इन दी हिमालयाज। ठीक है, ये ईस्टर्न रीजन में होता है, ये वेस्टर्न रीजन में होता है। वैसे ही यूपीएससी ने फंडामेंटल्स में ही इन्हीं तीन स्पीशीज को पूछा, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में होती है, और सब लोग इसका स्टेटस याद करेंगे, आईयूसीएन स्टेटस, है ना, कि ये एंडेंजर्ड है, कौन सा प्रोजेक्ट इस पे चल रहा है, कहाँ पे पाया जाता है, हर एक चीज याद करेंगे। बट the basic feature of this species was asked, that is whether it can see in the daylight or not। ठीक है, are they nocturnal or not, बस that's it what was asked। ठीक है, so इसमें lion tail macaque is not this nocturnal animal, but rest all of them are nocturnal। These animals, Malabar civet and sambar deer, both are the nocturnals। ठीक है, नॉक्टर्नल्स कौन होते हैं? जो दिन और रात दोनों में देखते हैं, जो रात को देखते हैं। ठीक है, डन। दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट एंड दे आर एक्टिव एट द डस्क एंड डॉन। चलो, there was one more question asked in UPSC regarding the species only, and this was asked कि invasive species specialist group that develops the global invasive species database। ठीक है, कल नहीं परसों के न्यूज़पेपर में आया था, कल के न्यूज़पेपर में, that it was asked about domestic cats। ठीक है, you need to answer me in this comment section
ठीक है, या तो आप मेरे नंबर पे, जो मैं नंबर आपको देता हूँ, उस नंबर पे मैसेज कर दो, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो दैट इज डोमेस्टिक कैट एन इनवेजिव स्पीशीज और नॉट. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ, ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस कौन बनाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? तो स्पीशीज के साथ अगर आपको पर्टिकुलरली पता हो तो IUCN ही करता है ना. रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, यस, they are mostly like involved in conservation purposes and the developmental part and the funding and running the programs for conservation. ठीक है. और जो डेटा है पर्टिकुलरली IUCN का रेड बुक है ना, तो दैट डेटा एंड कलेक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स अबाउट स्पीशीज इज मेंटेन्ड बाय IUCN. ठीक है. और दिस इज द इन्वेजिव स्पीशीज specialist group, ठीक है, which maintains the global invasive species database, and it maintains the hundred of the worst all of the hundred of the worst invasive species in the world. ठीक है. तो you need to understand these things कि कैसे UPSC क्वेश्चन पूछता है from current affairs. So let's begin with the discussion of the day, and the first news was about Aditya L1 as it embarks on 110-day journey to L1 point. Aditya L1 carried out 4 earth-bound maneuvers. ठीक है. अपोजी मोटर हमने पहले ही पढ़ा है कि दिस विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ फर्स्ट, और उसके बाद धीरे धीरे हर एक रिवोल्यूशन के बाद, एक ऑर्बिट के बाद, इट विल गेट अ थ्रस्ट, और ये नेक्स्ट ऑर्बिट को शिफ्ट करेगा, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट को शिफ्ट करेगा, और लास्ट में 4 राउंड्स लेने के बाद इट हैज शिफ्टेड टू ट्रांस लैंग्रेजियन L1 पॉइंट. ठीक है. और इंसर्शन हो गया है L1 ऑर्बिट को, और अब ये जाके L1 ऑर्बिट को रिवॉल्व करेगा. इंडियाज आदित्य L1, द कंट्रीज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द ट्रांस लैंग्रेजियन L1 इंसर्शन. चला गया ये L1 ऑर्बिट में. नाउ दिस विल travel a journey to the L1 point. This L1 point is between Earth and Sun. ठीक है. अर्थ और सन के बीच में ये पॉइंट है. However, Aditya L1 is going to face some issues and there are challenges in its way. What are these? First is extreme temperature variation on moon, ranging from 121 degrees Celsius to, okay, this Aditya L1 journey so far, the Aditya L1 was launched on September 2, 2023. This needs not to be here. ठीक है. This Aditya L1 was launched on September 2, 2023, and this aims to study the sun. And Aditya L1 aims to study the sun which has 7 payloads. Aditya L1 के 7 payloads है. Particularly अगर आपको याद रखना है तो you need to remember this steps. That is suprathermal and energetic particle spectrometer. What is this instrument? This instrument will begin collecting data on energetic particles इन द अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर, जिसकी वजह से जो ये अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में पार्टिकल्स आते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स. कहाँ से आते हैं? ये सन से आते हैं. और सन से ये कैसे आते हैं? ये सोलर विंड्स के थ्रू आते हैं, ये सोलर फ्लेयर्स के थ्रू आते हैं. ठीक है. और वही जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, दे मे डिस्टर्ब द पाथ ऑफ आदित्य L1, दे मे डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन चैनल विच इज बिटवीन आदित्य L1 एंड द ग्राउंड बेस्ड स्टेशन. ठीक है. अर्थ बेस्ड ग्राउंड स्टेशन. और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, या जितना भी ये ऑरोरा बोरेलियस, ऑरोरा नॉर्दर्न लाइट्स, जितना भी आप देखते हो, ठीक है, जितना भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये सब चीजें कैसे बनती है, इसी को स्टडी करने के लिए इज दिस a payload on Aditya L1 which is called as STEPS. ठीक है. तो Aditya L1 mission aims to enhance our understanding about sun's behavior and the effects on space weather. ठीक है. तो let's have a brief look about the dedicated solar mission Aditya L1. So this is India's first space-based solar mission to study the sun. It was launched in September 2, 2023. And why is there a need for solar mission? What is the need for solar mission? If you see that the orbit is around how much? 150. Our sun
who is the nearest sun, which is the nearest what star to Earth, is distanced at 150 million kilometers and is the largest object and is the only source of energy, है ना? However, if you see at the central region of the sun, which is known as core, ठीक है, सन के सेंट्रल रीजन को क्या बोलते हैं? कोर। इस कोर का जो टेम्परेचर होता है, दिस टेम्परेचर रेंजेस अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर अ प्रोसेस कॉल्ड एज फ्यूजन टेक्स प्लेस। क्या होता है? फ्यूजन, ना कि फिशन। दिस टेक्स प्लेस एट द कोर ओनली। हाउएवर, सन का जो विजिबल पार्ट है, जो हमें दिखता है ना, is known as photosphere. This photosphere is relatively cooler and has a temperature of around 5500 degree Celsius. ठीक है? Then sun is actually the powerhouse which charges the Earth's system. But ये जो सोलर पावर आ रहा है, ये जो पावर हाउस है सन, this is disturbed by what? Solar storms. एंड दीज सोलर स्टॉर्म्स जो हमारे तक एनर्जी लेके आते हैं, जो सोलर स्टॉर्म्स अर्थ तक एनर्जी लेके आते हैं सन की, दे डिस्टर्ब और दे डिसरप्ट दी अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज बेस्ड इन स्पेस, है ना? कोई भी स्पेस मिशन है, सैटेलाइट है, उसका कम्युनिकेशन है, दैट ऑल इज डिस्टर्ब्ड बाय व्हाट? सोलर स्टॉर्म्स, ठीक है। एंड द मिस्ट्रीज विच लाइक द कोरोनाज एक्सट्रीम हीट, सोलर साइकिल के ड्राइवर्स, सोलर साइकिल चलता कैसे है, सोलर विंड इमर्ज कैसे होती है, सोलर फ्लेयर्स आते कैसे हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होते हैं, है ना? ये सारी चीजें जो है, दे आर स्टिल अनरिजॉल्व्ड, ठीक है, और दे आर स्टिल मिस्ट्रीज। मिस्ट्रीज ऑफ सन, ठीक है, सन की मिस्ट्री क्या है कि हमें अभी तक की समझ में नहीं आ रहा है, दैट व्हाई इज देयर एक्सट्रीम हीट, व्हाई इज देयर एक्सट्रीम हीट, एंड आफ्टर दिस व्हाट इज द phenomena behind solar cycles, and what is the phenomena behind solar winds. That is why we are sending such mission, that is Aditya L1, just to advance and predict more accurately the space weather. The unraveling of stellar evolution has to be now undeciphered by this mission. So Aditya L1 जो है, what are its major objectives? आदित्य L1 के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना? क्या करेगा आदित्य L1? पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बताऊं तो व्हाट आर इट्स साइंस बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट विल इट डू व्हेन वी टॉक अबाउट द साइंस बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आदित्य L1? फर्स्ट इज इट विल अंडरस्टैंड कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकेंड इज इट विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कोरोनल मास इजेक्शन and solar flares, and it will also understand near earth space weather. This will be coupled with the dynamics of solar atmosphere, temperature anisotropy और solar wind distribution. अब हम देखते हैं कि जो हमारा आदित्य L1 है, इसके पेलोड्स कितने हैं, ठीक है। तो what are the payloads of this Aditya L1 which will help it in understanding the objectives or in fulfilling the objectives which Aditya L1 is going to have, which Aditya L1 is having? जो भी आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए what are the payloads? First payload is visible emission line coronagraph. This studies the solar corona. क्या स्टडी करेगा? कोरोना।
एंड दिस ऑब्जर्व द डायनामिक्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। मैं ये डिटेल्स में क्यों बता रहा हूं, क्यों मैं इसका हर एक चीज कवर कर रहा हूं, दैट यू विल नो इन द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो आई विल शो यू समथिंग। ठीक है, ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सी, लॉन्च्ड ऑन 25th ऑफ द December 2021, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप has been much in news since then. What are its unique features? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तो किसी और का था, है ना? तब भी इसका पूछा गया। What are its key goals? है ना? What potential benefits does it hold for the human race? This was asked in UPSC 2022. That is why we are covering this Aditya L1 today, है ना? इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है कि आदित्य L1 को कवर करना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो वन इज VELC. So this will study the coronal mass ejections. Second is a solar ultraviolet imaging telescope suite. What will this telescope do? It will have a particular objective of studying the photosphere and the chromosphere. And chromosphere को ये study करेगा. This will measure the solar irradiance variation in near UV. तो ये जो स्टडी करेगा दैट इज द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग. दिस विल स्टडी द फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर इन नियर यूवी. दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू ये स्टडी करेगा. ठीक है, देन कम्स द सोलेक्स, दैट इज सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर. व्हाट विल दिस स्पेक्ट्रोमीटर डू? This spectrometer functions as a soft X-ray spectrometer. This studies the solar flares or the flares which come out of the sun in X-ray mode. ठीक है, then comes the Helios. This is L1OS. ठीक है, you need to remember it. That is high energy L1 orbiting X-ray spectrometer. This will do what? This will be a soft X-ray and this will be a hard X-ray. ठीक है, what does this mean? This will investigate X-ray flares from the sun across a wide X-ray energy range, है ना? But this will use a hard X-ray spectrometer, whereas Solex will use a soft X-ray spectrometer. These are the payloads which will do the remote sensing. क्या करेंगे? These are the remote sensing payloads. ठीक है, let me add one more slide to it. So this will add what? These are the remote sensing payloads. इसके बाद आदित्य L1 पे there are in situ payloads also. What are the in situ payloads of Aditya L1? First is aspects. What is this aspects? This is Aditya Solar Wind Particle Experiment. What does this experiment have specificity of functions? The specific function is to study the solar wind and energetic ions. And analyze the energy distribution. Then the second in situ payload is PAPA. It's not Papa, it's PAPA. That is Plasma Analyzer Package for Aditya. This will gather data about plasma characteristics and composition in the interplanetary space. Plasma in interplanetary space. Then the third in situ payload of Aditya L1 will be MAG. What is this? This is Advanced Triaxial High Resolution Digital Magnetometer. What is this? This is magnetometer.
ठीक है. What does this magnetometer, like, what is the function of this magnetometer? So this magnetometer will function and this will measure low intensity interplanetary magnetic field. This will measure what? Magnetic field, and it has two magnetic sensors particularly, and they will help in the study of magnetic waves or magnetic sphere or the magnetic field around sun and earth. Oh, what is the uniqueness of this Aditya L1? Why is it so much of a pump up show? है ना? क्या यूनिकनेस है आदित्य L1 की जो इससे पहले मिशंस में नहीं थी? ठीक है, इसको समझना है. व्हाट इज द यूनिकनेस बिहाइंड आदित्य L1? सो फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट स्पेशली और स्पेशली, हाँ, रिजॉल्व द सोलर डिस्क इन नियर यूवी बैंड. जो सोलर डिस्क है, अब आप बोलोगे सोलर डिस्क क्या होती है? दिस सोलर डिस्क इज अ सर्कल अराउंड द सन स्फीयर. ठीक है, दिस सोलर डिस्क विल बी स्टडीड अंडर अ यूवी बैंड. देन CME dynamics close to the solar disk, these CME dynamics will be studied. ठीक है, और हमें पता चलेगा that what are the intricacies of this solar disk, because these are not yet discovered, or these are not yet, the solar disk CME is not yet studied very well till date. So that makes the uniqueness of Aditya L1 separate and distinguishable from the other missions which have been sent to sun. ठीक है, the anisotropy of the solar wind and the interplanetary magnetic field fluctuations contain important information. जब हम बोल रहे हैं कि सोलर डिस्क को स्टडी करेंगे, तो दिस सोलर डिस्क कंटेन्स द anisotropy of the solar winds, that is the anisotropy of solar winds. ठीक है, these contain the interplanetary magnetic field fluctuations and the information about the fluctuations of interplanetary magnetic field. Because जितना मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशन आएगा उतना ही हमें समझ आएगा कि कहाँ पे सोलर बॉडीज बन रही है, कहाँ पे स्टार्स बन रहे हैं, कहाँ पे स्टार्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. सोलर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब ये है कि जो पास में बॉडीज है उन बॉडीज में चेंज आ रही है, चाहे वो सन के आसपास दूसरे स्टार्स है, चाहे वो सन के आसपास या हमारे टोटल सोलर सिस्टम में रिवॉल्व होने वाली अदर गैलेक्सीज है. ठीक है, तो हर एक का इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है. यहाँ पे हमें स्टडीज में बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी. ठीक है, सो दैट इज अबाउट दी सोलर और द पेलोड्स एंड द यूनिकनेस ऑफ आदित्य L1. Why is the point Lagrangian L1 important? Why is L1 point important? Because this L1 point is one of the gravitationally stable point. क्या है ये? Gravitationally stable point in the space, where the gravitational force of two large bodies like Sun and Earth balances out. So this has a balanced gravitational pull and push. This is located about 1.5 kilometers from Earth towards the Sun. Therefore, L1 provides us an uninterrupted एरिया जहां पे कोई भी इक्लिप्स नहीं होता है, ऑक्यूलेशन नहीं होता है. इट कैन कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द सन विदाउट एनी ब्लॉकिंग ऑफ व्यूज. कंटिन्यूस नजर रह सकती है सन पे 24/7 और कोई भी व्यू अर्थ से ब्लॉक नहीं होगा. इट कैन कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द सन. elliptical heliocentric orbit like the Parker solar probe is where the satellite will be stationed. ठीक है, तो देयर विल बी
दिस पार्कर सोलर प्रोब जो इससे पहले गया था, दैट इज प्लेस्ड इन एन इलिप्टिकल हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट, while as द L1 पॉइंट इज सच अ पॉइंट जहां पे कोई भी एक्लिप्स नहीं होगा, जहां पे कोई ऑक्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है। सो दैट इज वाई द सोहो, दैट इज द सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, which is an international solar observatory, is already located at L1, demonstrating its utility, that how much important is this point। ठीक है। सो आदित्य L1 जर्नी अगर हम ट्रेवल करें फ्रॉम अर्थ टू सन और टू L1 पॉइंट, है ना, L1 to this Earth to L1, the journey from Earth to L1. The journey will have two phases. One is the Earth centric or Earth centered orbit. Then this orbit will get transfer, और ये अर्थ ऑर्बिट से ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा? अर्थ SOI एग्जिट इसको बोलते हैं। और उसके बाद ये एक फेज में चला चला जाएगा जिसको बोलते हैं क्रूज phase, and this phase, after this phase it will enter the L1 orbit। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप हमें बताइए कि ये कौन से फेजेस है, पर्टिकुलरली ये क्रूज फेज क्या होता है ना। एंड डू यू थिंक दैट अगर ये अर्थ है और ये L1 पॉइंट है और ये सन है, क्या ये डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर्स की स्ट्रेट है? और जितना आप बोल रहे हो कि ये जो सन है हमारा, ये जो L1 पॉइंट है हमारा, L1 या आदित्य L1 जो पॉइंट है हमारा, आदित्य L1 जो सैटेलाइट है हमारा, जो ये अर्थ के ऑर्बिट में रहेगा, है ना, ये ऐसे अपना रास्ता ट्रेवल करेगा। इज दिस 1.5 किलोमीटर और इज द स्ट्रेट लाइन 1.5 किलोमीटर? ठीक है। सो पर्टिकुलरली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रैवलिंग जर्नी, इसका रास्ता क्या है, ये कैसे ऑर्बिट्स को ट्रांसवर्स करेगा, कैसे ट्रांसफर करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, एंड वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट इज देयर अ शॉर्टेस्ट रूट टू इट और नॉट। ठीक है। जैसे हमने चंद्रयान में देखा था और जैसे हमने इसमें देखा था जो रशिया का सैटेलाइट था, है ना, दैट ट्रेवल्ड फास्टर एंड रीच्ड द मून बिफोर एल दिस Chandrayaan 3। नाउ द फेज 1 ऑफ आदित्य L1 विल बी अर्थ बाउंड। ठीक है। जिसमें अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स होंगे और अर्थ बाउंड ये रिवॉल्यूशन करेगा। 5 मैन्यूवर्स होंगे, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू 5 मैन्यूवर्स to gain the necessary velocity, then it will, the trajectory will change, or trajectory will go towards the L1, that is the Lagrangian point। ठीक है। and second phase will be this trans Lagrangian insertion trajectory। इस trajectory को बोलते हैं, this trajectory will be in this way, it will go like this। ठीक है। this will be 110-day trajectory towards the L1 point। Once it travels this orbit, then it will reach the L1 orbit, and then the mission objectives and operations will start। So that makes the L1 mission so much significant for India। ठीक है। बिकॉज इंडिया का ये पहला अपना स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होगा, सोलर ऑब्जर्वेटरी होगा। आदित्य L1 मिशन इज बिल्ड्स ऑन इसरोज प्रायर एक्सपर्टीज, जैसे हमने चंद्रयान 1, एस्ट्रोसैट, यूविट, ऐसे सैटेलाइट्स या ऐसे मिशंस हमने पहले अंजाम दिए हैं, उसी की बेसिस पे, एंड विद द कोलैबोरेशन एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फ्रॉम नासा, ESA, चाइना, CNSA, वी हैव बीन डेवलपिंग दीज थिंग्स। एंड जितना भी हमें स्टडी किया है नासा का पार्कर प्रोब या सोलर प्रोब, तो उस सब की बेसिस पे दी studies and the research from that, the outcomes from those missions have been helpful in the Chandrayaan, this Aditya L1।
ठीक है, एंड चंद्रयान 3 ऑल्सो. So the way forward or the last point of this start discussion will be that कि Aditya L1 is a breakthrough for India's foray into the solar studies, है ना. This is definitely a breakthrough. However, we need to understand one more thing, that the solar studies and space-based astronomy में India has developed a lot, and India has grown out of its uh, shell, and it has broken its shell, and it has entered the new dimension of space-based observations. So this Aditya L1 will be a key breakthrough for our future missions. If we talk about landing the humans on moon, है ना, sending the humans on Mars, or sending the humans to the other planets, going for space based missions, or you can say the space scrapers, है ना. You can see the, जैसे हमने शक्ति मिशन किया था फॉर सैटेलाइट सिक्योरिटी, है ना. तो that is the point, or clearing the space orbits, clearing the junk, debunking the space, है ना. So those are the missions which are the future of space exploration, or you can say the militarization of space. That is where the outcomes and the studies from these missions like Aditya L1 or Chandrayaan 3 will be helpful for us, and that is how we will be benefited from this space. So the solar space programs of other countries like Helios 2 solar probe of NASA and ACE of NASA, नासा का पार्कर सोलर प्रोब 2018 का, जिसका ये कंपोनेंट है लिविंग विद द स्टार इनिशिएटिव, है ना. ऑल्सो द सोलर ऑर्बिटर ऑफ ईएसए एंड नासा इन कोलैबोरेशन. दीज आर द डायनामिक्स जहां पे हम हमें जाना चाहिए, एंड दीज आर द कोलैबोरेशंस जहां पे इंडिया को मोर पुश करना चाहिए फॉर इट्स ओन बेनिफिट्स. सो the currently which are active solar or sun monitoring spacecrafts are iris, नासा का जो 2013 में गया था, विंड जो कि नासा का है 1994 में गया था, देयर इज हिनोड जो जापानीज एजेंसी का है, देयर इज स्टीरियो जो नासा का है, 2006 का मिशन है. तो दीज मिशंस यू कैन रीड अबाउट इट एंड यू कैन डिस्कस इट एंड यू कैन फर्दर refer to these missions. Now talking about the special session of parliament, and this special session is a 5-day special session जिसमें पहला दिन पार्लियामेंट में होगा, ओल्ड पार्लियामेंट में. सेकेंड डे विल बी देयर इन, सेकेंड डे पे फोटो शूट होगा, और थर्ड डे पे दे विल गो टू द न्यू पार्लियामेंट. सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पार्लियामेंट्स प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन. What is prorogation and what is dissolution? What is the difference between proroguing a session and dissolving the assembly? And two things are totally different. Prorogation means a time frame or winding up of one session. This is winding up of the session, while as a dissolution is dissolving of the assembly, dissolving of the government, dissolving of the Lok Sabha. Then president has the power to summon the houses to meet at least once within the 6 months. And the original provision of the British times, that is the gap of 6 months between two sessions, retaining the British era conditions which have been adopted. ठीक है, जैसे ब्रिटिश एरा में होता था कि 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, वैसा ही हमने अडॉप्ट कर लिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी. ठीक है. However, attempts to change the gap to 3 months were rejected during Constituent Assembly debates, particularly because Dr. B.R. Ambedkar was totally of this concern that there should not be frequent sessions and there should not be lengthy sessions, as this will hamper the normal functioning of the legislators and the executive. So there is no fixed timetable of the Constitution. Constitution does not specify a fixed number of sessions or days of the sitting. Typically, 3 sessions are held, that is budget session, monsoon session, and winter session.
A fixed calendar was proposed in 1955, but this was never implemented. However, the duration and dates of the sessions vary based on the legislative agenda कि गवर्नमेंट को कितना काम होगा उसी हिसाब से डेट और ड्यूरेशन चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हर बार वो 10 दिन, हर बार वो 15 दिन या 20 दिन के लिए मिले। ठीक है, इट डिपेंड्स। और ये जो सेशन है ये समन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना, ये सब प्रेसिडेंट का काम होता है। टॉकिंग अबाउट द स्पेशल सेशन, so the term special session is not and not explicitly mentioned in constitution or the rule books, so it's not mentioned there. Article 352 deals with the proclamation of emergency, mentions a special sitting, not a special session. ये चीज याद रखनी है। Special sessions have been called for specific purpose or significant national occasions. Past में ऐसे sessions हुए हैं। Historical precedents include that the sessions on the eve of independence and Indochina War mark the and to mark the anniversaries of parliament, mark the anniversaries of some particular persons at that point. Historically special sessions have been called. ठीक है, इसके बाद the special session of parliament is a unique occurrence with no specific constitutional provision. It has to be used with various purposes and all. That's about this special session. Talking about the women reservation bill in the legislature, of which everyone is talking, कि कांग्रेस लीडर भी बोल रहे हैं कि हमें क्रेडिट दे दो, पीएम मोदी को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, एक यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, कि पीएम मोदी जी को कांग्रेचुलेट करो कि उनने वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आए। तो एक्चुअल में कौन लेके आया था और क्या इंटरकेसीज है वुमेन रिजर्वेशन बिल की, और वुमेन रिजर्वेशन बिल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वुमेन रिजर्वेशन पे क्या क्या चीजें हैं। 75 ईयर्स हो गए हैं and still we are having only 14 to 17% of the representation of women in the highest most deliberative body of India, that is the parliament. So actually recently in March 2023 there is this political leader known as K Kavitha who sat on hunger strike at the Jantar Mantar in Delhi demanding the early passage of women's reservation bill. अब इन्होंने बोला कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को जल्दी जल्दी पास कीजिए। ठीक है, और इसी से ये चीज वापस लाइमलाइट में आई कि वुमेन रिजर्वेशन बिल बहुत टाइम से पेंडिंग है। और कब से ये पेंडिंग है? 2008 से पेंडिंग है। एक्चुअल में 2008 से भी पेंडिंग नहीं है, 1996 से पेंडिंग है। 1996 से ये बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और 1998, 99, 2004, 2010 कॉन्टिन्यूसली ये बिल लैप्स होता जा रहा है। ठीक है, इवन गीता मुखर्जी कमेटी ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर दिस थिंग। ठीक है, और ये बिल कॉन्टिन्यूसली लैप्स होता जा रहा है। एक्चुअल में इसमें दिक्कतें क्या है, कौन ऐसा कर रहा है जो ये बिल पास नहीं होता? क्योंकि अगर आप देखो जब भी ये पास होने वाला होता है तो देर आर लाइक हीटेड डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पार्लियामेंट में कि पास करना है नहीं करना है। कोटा विद इन द कोटा, दैट इज ऑलरेडी देर इज कोटा फॉर ओबीसीज, और ओबीसीज के अंदर फिर और कोटा मिलना चाहिए रिजर्वेशन का वुमेन्स को, है ना। ओबीसी वुमेन को अलग कोटा मिलना चाहिए, दैट इज द जो उनका ऑलरेडी कोटा है इन द 27%, है ना। 27% जो उनका रिजर्वेशन है, उसके बाद उनको और कोटा मिलना चाहिए कितना, ये वुमेन का कोटा with the 33% reservation in parliament. So that is also one more like a specific provision of this bill कि अगर आप देख रहे हो that जनरल पब्लिक में, जनरल के बाद ओबीसी और ओबीसी में भी वुमेन, तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिससे देर आर इश्यूज की इस पे कंसेंसस नहीं बन पा रहा है दैट वेदर दिस शुड बी अलाउड और नॉट। तो ओनली अ फ्यू स्टेट्स लाइक ओडिशा का बीजू जनता दल एंड वेस्ट बंगाल का तृणमूल कांग्रेस, they have reserved some seats for women in the election candidature, and particularly some states like Bihar and Gujarat have around 50% of the reservation clause for women in the panchayats. ठीक है, और अभी भी हमारे पास पंचायत में ही रिजर्वेशन है। इफ यू टॉक अबाउट द लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, है ना, तो 33% का रिजर्वेशन बस पंचायत में ही है। बट अगर आप करंटली देखो तो इंडिया का स्टेटस 144th रैंक है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पे व्हेन वी टॉक अबाउट द वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। तो इतना पीछे होने के बाद हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के पीछे भी हैं, तब भी वी आर स्टिल एडमेंट ऑन दिस थिंग दैट वेदर वी शुड पास दिस बिल और नॉट।
As Dr. Ambedkar has said this thing that I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. ठीक है. So Dr. B.R. Ambedkar highlights this thing कि वुमन का अचीवमेंट और वुमन का एम्पावरमेंट, वुमन का प्रोग्रेस कितना ज्यादा जरूरी है. And at this juncture, we are still having only 14% of the reservation in the parliament, or 14% of the presence. Sorry, not reservation. This is presence. ठीक है. Only 14% legislators are there from the women community. तो what is the need of this women reservation bill actually? क्या नीड है इसका और क्यों होना चाहिए वुमेन रिजर्वेशन बिल? हाँ, बताइए क्यों होना चाहिए वुमेन रिजर्वेशन बिल? बिकॉज एक्चुअली इफ यू सी this women reservation bill, if you start with this thing, so if I talk about the need of this women reservation, so under representation or under reservation of these women is the reason for their political backwardness of women. And if you compare it globally, so we are lowest, and we are one of the lowest, as if you see that according to the data from PRS, Rwanda has 61% and South Africa has around 43%, and even Bangladesh is ahead of us, which has 21% of. They are ahead of India. They are ahead of India when we talk about women representation in legislature, and India has a rank of around 144 when we talk about the representation of women in parliament, है ना? So there is a need to bridge this gender gap in the development and particularly in the political empowerment. Why? क्योंकि जब तक आप वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिटिक्स में नहीं लेके आओगे तब तक जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं होगा, है ना, इन लॉ मेकिंग, which is necessary, because if you do not make gender sensitive and gender sensible laws, then how will you make a gender sensitive and gender sensible administration? और तब तक आप कैसे ये ट्रेन कर सकते हो या ट्रेनिंग दे सकते हो जब तक लॉज ही नहीं है आपके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, है ना? तो इफ यू सी द ग्लोबल एग्जांपल्स लाइक द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, है ना, these Scandinavian countries have implemented policies for gender equality and women empowerment. And if you see this thing, to Norway has a quota system which requires 40% of the seats on corporate boards to be occupied by women. ठीक है. Plus, there are countries which are led by women. Are the best policies and governance practices are there where the countries are led by women. So in constitution also there is article 15 clause 3, and there is article 325. The article 15 clause 3 says that the state is empowered to make special provisions, legislative or otherwise, to secure women's socio political advancement. ठीक है. तो वुमेन का सोशो पॉलिटिकल एडवांसमेंट इज देयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक द सोशल स्पेशल प्रोविजंस. प्लस
Article 325 guarantees equal rights for both the sexes and entitles women to enjoy economic, social, cultural, and political rights on the equal footings. Similarly, this Women Reservation Bill of 2008 asks for 10% of the seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies, which was first asked in 1955. है ना? However, with the respective and prospective governance, the bill and the provisions later improved और हमारे पास नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान 1988 का आया, which recommended for the first time 30% of the reservation and 30% of the seats in all the elected bodies in all elected bodies to be reserved for women. ठीक है। और अगर आप अभी तक देखो तो 2010 में इट वाज द बिल व्हिच वाज पास्ड बाय राज्यसभा इन 2008 एंड इन 2010 वाज रेफर्ड टू अ स्टैंडिंग कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के पास जाने के बाद उसके बाद 15th लोकसभा बनी और बिल लैप्स हो गई। The particular key provisions of this women reservation bill we have already dealt with. However, I wanted you to understand the perspectives of mains. ठीक है कि मेंस में अगर हमें आंसर लिखना है तो व्हाट आर द पॉइंट्स विच वी नीड टू डिस्कस। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी नीड टू डिस्कस। इस बिल के जो की प्रोविजंस है अबाउट द 33% रिजर्वेशन है ना, these provisions we have already discussed in our past debates also, in our past discussions also. Now talking about the G20 and a full analysis of G20. ठीक है, so what is the historical background of G20? If you see that there was a financial crisis in 1997, 1997 का जो क्राइसिस हुआ था है ना, ऑफ एशियन टाइगर्स है ना, that is the countries of East and Southeast Asia which caused its establishment in 1991. इसी फाइनेंशियल क्राइसिस का बेस था जिसकी वजह से G20 बना 1999 में। कब बना? 1999 में। So this worked first as the forum for the central bank governance and finance ministers of the major industrialized and developing economies. However, later in 2008 का जो क्राइसिस हुआ था, पहले तो G7 या G20 का ग्रुप इसलिए नहीं बना था, मतलब G20 का जो बेस था दिस वाज एक्चुअली अ समिट और अ फोरम, बट इन 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था जिसको सब प्राइम क्राइसिस हम बोलते हैं, ठीक है, दिस ग्रुपिंग वाज अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ heads of the state or heads of the government when this became that the crisis coordination would be possible only at the highest political stage. और उसके बाद 2009 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और उसके बाद ही इसको G20 लीडर्स मीट बोला गया। अब G20 कंट्रीज में कितनी कंट्रीज है, तो अगर आप देखो तो देर इज अर्जेंटीना, देर इज ऑस्ट्रेलिया, देर इज ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की and UK, United States, European Union, and now there is African Union also. So now the G20 is what? G21. Done. So in addition to these members, the countries of G20 each year there are invitees from guest countries also. जैसे इस साल भी हमने not only G20 countries के heads बट बाकी सारी कंट्रीज के भी लोगों को बुलाया था एज इनवाइटीज टू द G20 समिट। और अगर आप करंटली देखो तो G20 ऑक्यूपाई हैज अराउंड 85% अकाउंट्स फॉर अराउंड 85% ऑफ द वर्ल्ड एंड 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड
and 2/3 of global population. ठीक है. So that signifies the importance of G20 countries, and you can remember this map, or you can refer to this map for more clarity on members. ठीक है. So if you talk about the structure and functioning of G20, the G20 operates on the basis of annual meetings. ठीक है. और annual meetings होती है इसमें. एनुअल मीटिंग्स जो होती है वो किसकी होती है? वो फाइनेंस मिनिस्टर्स की होती है और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की होती है. ठीक है. या जैसे मैंने बोला, इसका जन्म ही कहाँ से हुआ था? फाइनेंशियल क्राइसिस से हुआ था. तो इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. विद द लीडर्स समिट हेल्ड वंस इन अ ईयर, द G20 कंसिस्ट्स ऑफ टू पैरेलल ट्रैक्स. दो इसमें पैरेलल ट्रैक्स होते हैं. पहला होता है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक. क्या है फाइनेंस ट्रैक और क्या है शेरपा ट्रैक? दिस शेरपा ट्रैक, the Sherpa of a member country are the personal emissaries. ये कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं जो पर्सनल लेवल पे मीट करते हैं इन सब कंट्रीज के. दे कॉन्सेंट्रेट ऑन सोशो इकोनॉमिक इश्यूज. So this is no longer only a financial firm now or financial forum now. This also focuses on socio-economic issues like agriculture, anti-corruption, climate change, climate digital economy, education, employment. ये सब चीजों पे ये ध्यान देते हैं. इसके साथ साथ व्हाट इज द फाइनेंस ट्रैक? दिस इज एक्चुअली हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. और ये करते क्या है? दे जनरली मीट 4 times a year. एक साल में ये 4 बार मिलते हैं. विद 2 मीटिंग्स बीइंग हेल्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है. इनकी साइडलाइंस में ये 2 मीटिंग्स करते हैं और 2 मीटिंग्स ये एनुअली कर देते हैं हर साल. तो 4 बार फाइनेंस ट्रैक मिलता है और शेरपा ट्रैक इज वंस इन अ ईयर मीटिंग. These are the two tracks. However, there is one more thing that is known as troika. What is troika? Troika क्या होता है? Troika is actually the G20 does not have a charter or a secretariat. ठीक है. G20 का कोई सेक्रेटरिएट नहीं है. However, जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो रिवॉल्व होती है, which includes the previous, present and the next president. जो भी G20 को प्रेसाइड करने वाला है, होस्ट करने वाला है, वो 3 लोग, जो पिछला था, जो प्रेजेंट है और जो नेक्स्ट है, ये तीनों लोग मिलते हैं और G20 की प्रेसिडेंसी को ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, जो भी होने वाला होता है. ठीक है. सो द G20 प्रेसिडेंसी होस्ट्स द समिट एंड डायरेक्ट्स द एजेंडा फॉर अ कैलेंडर ईयर, कि उनको क्या क्या करना है. ए नॉन बाइंडिंग फोरम, this G20 or this troika particularly is a not legally binding, or the decisions of G20 are not legally binding. ठीक है. So working with the international organizations, the G20 members also work closely with IMF, World Bank and WTO. Then comes the significance of G20 summit. So there is wider area of cooperation when we talk about the G20 summit. Like G20 in Hangzhou, चाइना 2016 में जब मीटिंग हुई थी. ठीक है. सॉ द कन्वर्जेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना ऑन पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है. आप देखना G20 की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है ना. तो हांगजो में जो 2016 में समिट हुई थी, वहां से हमें पेरिस एग्रीमेंट पे कंसेंसस डेवलप हुआ था, किसके बीच? यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना. G20 की जो मीटिंग 2018 में अर्जेंटीना में हुई थी, इस मीटिंग में वी हैव सीन अ फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज द की एजेंडा. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज द की एजेंडा. 2021 में जो समिट जर्मनी में हुई, वी हैव सीन
focus on the issues like money laundering, international tax havens and corruption. ठीक है, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसे ही बाली इंडोनेशिया में जो 2022 में समिट हुई, we have seen focus on humanitarian crisis, financial stability, poverty, and aid to developed and developing nations, aid from developed nations to developing nations. Among all the other things, these were the particular issues, ठीक है, जो इस समिट में डील किए जाते हैं, और यही इश्यूज ऐसे हैं जिससे G20 समिट की सिग्निफिकेंस बढ़ती है, ठीक है। एंड दिस नॉट ओनली इज द रिजल्ट, हाउएवर इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी, एज लीडर्स हैव पर्टिकुलरली प्रॉमिस्ड, जो इस साल समिट हुई 2023 में, वी हैव सीन कि लीडर्स हैव दिस सबमिटेड टू दिस थिंग दैट जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था, इस पे भी बात हुई है अभी। प्लस नॉट ओनली फूड सिक्योरिटी बट ऑल्सो जेंडर इक्वालिटी, जिस पे बात हुई है इस बार, है ना। नॉट ओनली जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन बट ऑल्सो इन वर्कफोर्स, पे गैप, हेल्थ केयर, एवरीवेयर वी हैव टू वर्क ऑन जेंडर इक्वालिटी। इसके साथ साथ द अदर इश्यूज वेयर बैलेंसिंग द ग्लोबल पावर, ठीक है, ब्रिंगिंग कॉमन प्लेटफॉर्म्स, एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। What are the issues and limitations of G20 is first consensus development. What is consensus development in G20? तो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 एक्चुअली स्ट्रगल्ड टू कम अप विद कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्सेज। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो देयर इज फर्स्ट अ G7 ग्रुप विच इज इनसाइड G20, एंड देन देयर इज अ G8 ग्रुप विच इज इनसाइड G20, एंड देन देयर कम्स द लेटर और द लार्जर ग्रुप दैट इज G20। G7 आर पर्टिकुलरली द वेस्टर्न कंट्रीज, एंड G8 में अगर आप देखो तो देर इज रशिया, है ना, विद द अदर नेशंस। सो दिस थिंग और दिस G8 और G7 ग्रुप particularly has a non similar ideological bias, or you can say there is an ideological tussle between the G7 and the G20 countries. There is an east versus west which is the biggest stumbling block in the consensus development, or in the particularly G7, this G20 summit 2023, the most important thing and the most important achievement was this, that India was able to unanimously get passed or get the Delhi declaration passed from all the nations, है ना। और G20 समिट जो इंडिया की प्रेसिडेंसी में हुआ, दिस समिट एक्चुअली coincides with India's Amrit Kal, and the summit was themed as Vasudev Kutumbakam, है ना। और we can say one earth, one family and one future. That is the base and that is the philosophy of India, which India presided over G20, this 2023 summit. The host particularly and the G20 Sherpa from India, Mr. Amitabh Kant, has been applauded multiple times that the key tasks which were achieved and the passage of a Delhi Declaration was actually a biggest achievement. With this also we have African Union as a full-time member now under the G20 presidency of India, which has totally changed the dimensions and the discourse. Now what the focus is, that what were the particularly priorities of India, as we have seen कि हांगजू में जब हुआ था तो चाइना की प्रायोरिटी कुछ अलग थी, और अर्जेंटीना में जब हुआ तो देयर वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
जर्मनी में हुआ तो देयर वाज करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एंड केसेस लाइक दैट. बाली में हुआ तो वी सॉ पॉवर्टी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड ऑल ऑफ दैट. व्हाट वेर द पर्टिकुलरली priorities of India when we talk about the G20? So priorities were, first was the life movement, है ना, that is green development, climate finance and a lifestyle for environment. With this we had also accelerated inclusive and resilient growth. Accelerated inclusive and resilient growth, which was the focus area of India. After that we had also accelerating, or we focused on accelerating the progress on SDGs. You should note down these points, otherwise you will miss out on this. We focused on accelerating the progress on SDGs. We focused not only these but also technology transformation and digital public infrastructure. Again, we focused on multilateralism. These were the key objectives. और अगर आपको क्वेश्चन आता है मेंस में, तो हमें बस इतनी ही हेडिंग्स लिखनी है और इन हेडिंग्स के साथ हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है इन्हीं हेडिंग्स का. बस हमें इन हेडिंग्स को डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करना है. वी जस्ट नीड अ फ्लो चार्ट टू हाईलाइट द इंडियाज गोल्स. वुमेन लेड डेवलपमेंट ऑन SDGs. ठीक है. So these were the particularly focus areas of India's. So why is India's presidency so much significant? Because India's growing economic influence is there, and India has been or is the fastest growing large economy at present. है ना, it's the second largest economy, or it's the second largest growing economy. है ना, it's the fastest growing economy. So at this point, and if we talk about the climate governance, so India has been taken the leadership role in climate governance. Post this, India's focus has been always on inclusive growth. Climate governance, inclusive growth. Inclusive growth not only of the deprived sections but also women empowerment. ठीक है. इसके साथ साथ there is India's strategic importance. Why? Because not only the presidency of India will provide a platform to engage with the major powers, but also United States, Russia, China have developed now a consensus. So that is how India played a key role in the G20 summit. And if you talk about the major outcomes of this summit, the first of it was that African Union, which was added, changed the dimensions of G20 to now the 21st dimension. And what is the 21st dimension of G20 is African Union. African Union का inclusion या African Union का impact is that now G20 and African Union का membership offers an opportunity to reshape the global trade. ठीक है. और ग्लोबल ट्रेड रीशेप होगा तो उससे क्या होगा? द ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट विल नाउ चेंज, द डायमेंशंस विल नाउ चेंज. वी विल हैव वन मोर मार्केट. If we talk about from the platform of G20, we have one more market now to invest and to get investment from, that is G with this African Union. इसके बाद there is this global biofuel alliance, India led initiative, है ना. This initiative focuses on biofuels. This initiative focuses on an alliance from the government and international organizations and industry to promote the adoption of biofuels. This also focuses on energy transition and job creation. ठीक है. और इसके साथ साथ इंडिया हैज अदर प्रोग्राम्स. व्हेन वी टॉक अबाउट दी बायोफ्यूल्स, वी हैव PM जीवन योजना, वी हैव सतत, or we call it satat, and we have also
a Govardhan scheme, which focuses on biofuels. And the overall target of India, as we have seen, that as per the International Energy Agency, there will be a 3 to 3.5 times growth in biofuels as per International IEA or International Energy Agency, because these biofuels have a potential of getting the countries more closer to their targets of net zero. ठीक है, by this biofuel alliance, or by this biofuel alliance, and by this cooperation on the globe, this biofuel development, countries can achieve their net zero targets more earlier, है ना. तो नाउ द अलायंस वाज लॉन्च्ड विद 9 मेंबर्स. इसके जो पहले 9 मेंबर्स थे वो कौन थे? इसके पहले 9 मेंबर्स थे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका and UAE. These members constitute the major producers and consumers of biofuels. इसमें अगर आप देखो तो USA is having 52% share and Brazil has a 30% share, 30%, and India has particularly only 3% share in the global biofuel production. However, they in total contribute around 85% share in the production and 81% consumption of ethanol. These countries are important, and the initiative, that is Global Biofuel Initiative, is important. However, we have also invited the countries like Bangladesh, Singapore, Mauritius, and UAE. More than this, non G20 countries which are supporting the Global Biofuel Alliance are Iceland, Kenya, Guyana, Paraguay, Seychelles, Sri Lanka, Uganda, Finland. ये वो कंट्रीज हैं जो G20 का पार्ट तो नहीं है, बट दे आर सपोर्टिंग इन द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस. The international organizations which have helped and which have showed their support for global biofuel in this alliance are World Bank, Asian Development Bank, World Economic Forum, and the other organizations like UN Energy for All, UNIDO, Biofutures, International Civil Aviation, International Energy Agency, and all of it. इसके साथ साथ we got also one more breakthrough, that is India Middle East Europe Economic Corridor. So the MOU which was signed between Government of India, United States, Saudi Arabia, European Union, UAE, France, Germany, and Italy. This MOU which was signed between them are now partners in the broader initiative called as Partnership for Global Infrastructure Investment. This partnership comprises one dimension, and that dimension is known as Europe or Middle East Europe Economic Corridor. ठीक है. This PGII or Partnership of Global Infrastructure Investment was initially introduced during a G7 summit. ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था. कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में. This project aims for financing of infrastructure projects in developing countries. This will connect India to Middle East and then to Europe. This establishes a network of transport corridors, including railways and sea lanes, and this is seen as an economic or as a response to China's Belt and Road Initiative. ठीक है. Moving further to G20's Global Partnership for Financial Inclusion, this document was prepared by World Bank, है ना, and this was lauded
the transformative impact on digital public infrastructure over the past decades। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का डॉक्यूमेंट बनाया था, इसने देखा और अप्रिशिएट किया इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जिससे इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन में ग्रोथ हुई है। अब इंडिया में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, और वी कॉल इट रैपिड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, है ना, इट हैज अचीव्ड a 47 years worth of financial inclusion, 47 years worth of financial inclusion in just 6 years। That is what this document highlights, कि जितना फाइनेंशियल इंक्लूजन 47 ईयर्स में हो सकता था, उतना बस 6 साल में कर दिया किसने? इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने। एंड व्हाट इज दिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? और यही क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? यूपीएससी 2023 के मेंस में। कब पूछा गया था? 2 दिन पहले। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज डिस्कशंस, कि क्यों ये डिस्कशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ, जन धन मोबाइल, यही पॉइंट था जो इसका इंट्रोडक्शन बन जाता है इस क्वेश्चन का, जो यूपीएससी 2023 में पूछा गया। 47 ईयर्स का जस्ट 6 साल में हमने अचीव कर लिया। और इसको अचीव करने के लिए व्हाट आर द की पॉइंट्स विच वी हैड? वन वाज जन धन आधार मोबाइल, दैट इज जैम ट्रिनिटी which we had. This trinity boosted the financial inclusion rate from 25% to 80% in just 6 years. We had regulatory frameworks for Aadhaar based verification. Not only this, we have Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, and the success of this Yojana was highlighted by this thing, the fact that 462 million accounts were opened by June 2022. And out of these accounts, there are 56% of accounts which are held by women, है ना? More than this, government to person payments, that is DBT, are the payments which come directly from the government to the accounts of people. The India's digital government to person architecture facilitated a transfer of around, that is G2P transfers or payments facilitated around $361 billion payment from 53 ministries to 312 schemes। 312 स्कीम्स के अंदर 53 मिनिस्ट्रीज ने $361 बिलियन का ट्रांसफर पेमेंट किया है। गवर्नमेंट से गया है ये पैसा किधर? लोगों के अकाउंट में। ठीक है, तो दैट इज हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पूछा गया था इस साल के यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में। समझना है इस चीज को। देन कमिंग द यूपीआई, यूपीआई का डोमिनेंस, और अगर आप देखो तो यूपीआई पर्सपेक्टिव्स में only in May, like till May 2023, India has witnessed around 9.41 billion UPI transactions, which valued at around 14 trillion rupees. In UPI transactions, you can see that in financial year 2022 to 2023, nearly 50% of India's GDP, है ना, यूपीआई ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 नियर्ड अराउंड 50% ऑफ इंडिया जीडीपी। इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई है कि जितना हमारा 50% हो जाता जीडीपी का। इन दिस थिंग there has been a significant portion and contribution from private sector, and the efficiency has been doubled due to the participation of private sector। ठीक है, so there are banks customer onboarding costs in India which have dropped from around $23 to $0.1। Plus, with this we have now lower compliance cost for KYC। नो योर कस्टमर नॉर्म्स जो है वो इतनी ज्यादा ईज आउट हो गए हैं कि अगर आपको बैंक का अकाउंट खोलना है तो 5 मिनट में आप अपने फोन से खोल सकते हो। आपको बैंक जाना जरूरत नहीं है, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
देयर इज पर्टिकुलरली अकाउंट्स एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जिस पे काम हुआ है. देयर इज डेपा, DEPA, that is Data Empowerment and Protection Architecture, which provides individual control over their own data, है ना. So more than this, these आर द की पॉइंट्स जो हम यूज कर सकते थे अपने इस क्वेश्चन में जो यूपीएससी ने इस बार पूछा. चलिए आगे चलते हैं, हो सकता है यूपीएससी और भी कुछ पूछा हो. ट्रिपलिंग द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2023 or 2030. This is the target which was highlighted in, this was the aim which India highlighted, and this was the objective which India highlighted in G20 summit. That is, the G20 countries promised to work towards tripling the global renewable energy capacity by 2030. If met, this single step could avoid carbon dioxide emissions by 7 billion tons between now and 2030. अगर हमने ट्रिपल कर लिया इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे बाय 7 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ till 2030, as this has been estimated by International Energy Agency. This will limit the global warming at 1.5 degree Celsius. So that is how much important is this कि अगर हमने ये काम किया, that we increased, tripled our global energy capacity by 2030, तो हम एक तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को भी कम कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी कम हो जाएगा और objectives of Paris climate or Paris agreement will be achieved, है ना. There is commitment to food security and nutrition at global level which India has highlighted, and India's aim is to eliminate hunger and malnutrition. Acknowledging the global challenges like poverty, climate change, and pandemics which have affected the vulnerable population, particularly women and children, more severely, India has acknowledged that there is a need and there should be a commitment for global food security. और ये हमने क्यों किया है? क्योंकि रिसेंटली जो हमने इस डिस्कशन के पहले मोमेंट में ही स्टार्ट किया था, दैट वाज द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव. उस पे फोकस लाने के लिए इंडिया हाईलाइटेड दिस थिंग दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट इज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन. और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए India's historic consensus has developed on two things. One was the Deccan G20 high level principles on food security and nutrition, and the millets initiative called as Maharishi. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जहां पे इंडिया ने G20 पार्टनरशिप को एक अलग, G20 प्लेटफॉर्म को एक अलग रास्ता दिखाया. ठीक है. सम अदर इश्यूज विच इंडिया हाईलाइटेड वाज दिस थिंग दैट 2023 का जो डिक्लेरेशन था, दिल्ली डिक्लेरेशन, दिस बिल्ड्स अपॉन G20 डिक्लेरेशन विच वाज अर्लियर अडॉप्टेड इन 2015 टर्की डिक्लेरेशन. टर्की डिक्लेरेशन जो था, दिस टर्की डिक्लेरेशन 2015 का स्ट्रांगली डिनाउंस्ड द टेररिज्म. अनलाइक द G20 और जो G20 2022 में हुई थी बाली लीडर्स में, विच प्राइमरली फोकस्ड ऑन द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जो मैंने आपको इससे पहले बताया, दैट G20 जो बाली में हुई थी, दिस फोकस्ड ऑन क्राइसिस, पॉवर्टी एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, है ना. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन नॉट ओनली फोकसेस ऑन फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म but it also highlights that small arms and terrorist safe havens must be totally eliminated now, है ना. There has to be now a clear and contentious definition over the terrorism. Most of this has been highlighted through the FATF references.
ठीक है. एंड दिल्ली ऑल्सो focused and argued on this thing that the financial action task force must be strengthened, है ना. इसके बाद the healthcare resilience and research, resilience and research, the G20 New Delhi leaders declaration places significant emphasis on healthcare and prioritizes the need to build a resilient healthcare system. इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO and its core efforts for pre-pandemic and post-pandemic years have been highlighted in this summit. After this finance track agreements or India's G20 presidents has highlighted the impact of coordinated and comprehensive policy when we talk about what cryptocurrencies. Plus crypto asset regulation. Not only this, more robust and effective multilateral development banks. Multilateral development banks to address high developmental demand globally. To address high developmental demand globally has been highlighted. With this, India has its own India stack model जिसपे इंडिया काम कर रहा है फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अगेन द सेम पॉइंट, फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना. तो दिस वाज हाईलाइटेड. More than this, India Mercosur preferential trade agreement, which is an India and Brazil, both of them agreed to work together for the expansion of India Mercosur PTA to promote the economic ties. Mercosur is actually a trading bloc, है ना. Mercosur क्या है? Is a trading bloc between Latin American countries comprising of Brazil, Argentina, Uruguay, and Paraguay. Now, this Mercosur agreement or this Mercosur group is also important. This trading bloc, Mercosur trading bloc, is also important from the perspective of prelims. तो थोड़ा बहुत आप उस पे भी देख लेना. तो this came earlier into effect from June 1, 2019, 2009, 2009 में ये इफेक्ट में आया था. तब से ये स्टार्ट हुआ था. दिस एम टू एलिमिनेट कस्टम ड्यूटीज ऑन ए लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स agreed between India and Mercosur bloc. Commitment to climate financing. There has been a quantum jump from billions to now trillions. क्या मतलब है इसका? Now the climate financing need trillions of dollars to have a actual impact on reversing the effects of climate change. What are these? Like, it underscored, the Delhi Declaration underscored that the need for significant financial resources is there, and around $5.9 trillion are required in pre-2030 era. 2030 से पहले पहले इतना डॉलर चाहिए, $4 trillion around, for clean energy technologies and to achieve a net zero emission by 2050. Then G20 में इंडिया ने अपना कुछ कल्चरल शोकेस किया. लाइक शोकेस इन द सेंस वी showed the world that the cultural significance and the cultural impacts and the cultural heritage of India, जिसमें we have seen भारत मंडपम, ठीक है, which was inspired by the अनुभव मंडपम. We also see a bronze statue of Lord नटराजा, जिसपे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में 2019-20 में, which is a chola style sculpture. Then we also had a कोणार्क चक्रा, जिसके पास आपने मोदी जी को देखा होगा फोटोज लेते हुए बहुत सारे लोगों के साथ जो वहां से G20 के मेंबर्स आए थे, और जिसकी रील्स भी बहुत सारी वायरल हुई थी, है ना. तो दिस कोणार्क चक्रा ऑफ ओडिशा का सन टेम्पल है ये, जहां का चक्रा हमने यहाँ पे यूज किया था और यहाँ पे दिखाया था. विद दिस वी हैड ऑल्सो इमेजेस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी.
We also have Thanjavur paintings. We also had Dhokra art. We had a brass statue of Lord Buddha. We had this statue sitting near and under the Bodhi tree. Under the musical heritage, Hindustani, folk culture, Carnatic, and devotional music was there showcased at the G20 summit. In the G20 summit, we also have seen a more focused, or on the sidelines of G20, we have seen a development, or you can see that not only the summit highlighted the importance of India at the global level, but we strengthened the India US collaboration also. This collaboration was strengthened in some factor or in some areas, like first of all, resilience in semiconductors and semiconductor supply chain. Post this, we also have seen the India's support to the United States RIP and replace project. क्या प्रोजेक्ट है ये? This is aligned with the removal of Chinese telecom equipments. One more major outcome was the India and US major defense partnership, with space and artificial intelligence being the key themes and the key domains जहां पे हमने बात किया. इसके साथ साथ we have also seen the GEF 414 jet engine agreement. अब ये क्या अग्रीमेंट है? दिस इज द जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि GEF 414 जेट इंजन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. सो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस G20 समिट, जो आपको पढ़ने चाहिए थे और जो आपको याद रखने चाहिए. विद दिस आई आस्क एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द मेंस क्वेश्चन. जो मेंस का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था अबाउट द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये मेंस का क्वेश्चन आप देख लेना. इसका आंसर भी मैंने दे रखा है, मॉडल आंसर, बिकॉज ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इंपॉर्टेंट था. आपको इसको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा ताकि आप इसको समझ पाओ. ठीक है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. जय हिंद, जय भारत.